Namaste, myself JVN Professor K.K. Chaudhary, Faculty of Education and Methodology, Jyoti Vidyapeeth Women University Jaipur. Subject is Animal Physiology and Endocrinology. And today we will discuss about the next session, that is the composition of blood. Composition of blood. First we will discuss about the first point is physical characters of blood. Physical characters of the blood. The blood is more viscous. Viscous means thicker than water and feels sticky. क्या है कि blood is denser and more viscous, more thicker than the water and feel sticky. The temperature of the blood is 38 degree centigrade, about 1 degree higher than oral or rectal body temperature. Understand कि 38 डिग्री टेम्परेचर होता है ब्लड का, 1 डिग्री हायर देन रेक्टल एंड oral temperature, and it is slightly alkaline. The pH of the blood is ranging from 7.35 to 7.45. The color of the blood vary with its oxygen content. When saturated with oxygen, it is bright red. कि जो pH है 7.35 और कलर ऑक्सीजन सेचुरेशन के ऊपर डिपेंड करता है. जो हाईली सेचुरेटेड होता है तो इट इज ब्राइट रेड इन कलर, एंड व्हेन अनसेचुरेटेड विद ऑक्सीजन इट इज डार्क रेड. ठीक है. ब्लड कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 20% of the extracellular fluid. 20% of extracellular fluid. Okay. Amounting to 8% of the total body mass. 8% of total body mass. ठीक है. The blood volume is 5 to 6 liter in the adult male, यानी कि मेल के अंदर it is 5 to 6 liter, and in female it is 4 to 5 liter. Okay. The gender difference in volume is due to the difference in the body size. Several hormones regulated by negative feedback ensure that blood volume and osmotic pressure remain relatively constant. Especially important are the hormones aldosterone, antidiuretic hormone, atrial natriuretic peptide, which regulate how much water is excreted in the urine. कि कौन कौन से हार्मोन्स हैं? एल्डोस्टेरोन, कुछ हार्मोन्स एल्डोस्टेरोन, एंटीडायूरेटिक एडीएच, and ANP, atrial
natriuretic peptide which regulate the amount of water या how much amount of water is excreted in urine, कि कितनी अमाउंट आपकी यूरिन के अंदर पास होनी चाहिए. दिस इज डिपेंड्स अपॉन द these hormones. Next is the physical structure के बाद components of the blood. Components of blood. Whole blood has two components: plasma, a watery liquid extracellular matrix that contain dissolved substances, and second is the formed element. फर्स्ट क्या है इसमें? प्लाज्मा, और सेकंड इज फॉर्म्ड एलिमेंट्स. ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स ये हमने देखा कि व्हेन यू यूज सेंट्रीफ्यूज द ब्लड it is differentiated into the two parts, and in the center, near about center, a buffy coat have been formed, and after centrifuge you find that the upper part, which constitute 55%, is the plasma, and remaining 45%, that is the lower part, is the RBC. ठीक है, क्या है कि if a sample of blood is centrifuged in a small glass tube, the cells sink to the bottom of the tube while the plasma forms a layer on that. कि आरबीसी यानी कि सेल्स बॉटम पे हो जाएंगे क्योंकि दीज आर हैवियर एंड प्लाज्मा इज लाइटर जो आपके टॉप के ऊपर रह जाएगी. ठीक है, ब्लड इज अबाउट 45% formed element. 45% are the formed element and 55% is the blood plasma. Normally more than 99% of the formed elements are cells named for their red blood cells. कि जो 45% हैं जो उसके अंदर 99% क्या है आपके आरबीसी होते हैं. ठीक है, आरबीसी, pale colorless white blood cell WBC and platelets occupy less than यानी कि WBC और platelets less than 1% of the formed elements because they are less dense than RBC but more dense than blood plasma, so they form a very thin buffy coat layer between the packed RBC and plasma in a centrifuge blood. Now in the given figure we will show the composition of blood plasma and the number of various type of formed element into the blood. So first is the blood plasma. When formed elements are removed from the blood, ठीक है, अब इसमें आप यहां लिख सकते हो ब्लड प्लाज्मा, कि when formed elements are removed from the blood, a straw colored liquid called blood plasma is left. कि ब्लड में से जब आप फॉर्म्ड एलिमेंट को रिमूव कर दोगे तो एक स्ट्रॉ कलर लिक्विड रह जाएगा, दैट इज नोन एज द ब्लड प्लाज्मा. ब्लड प्लाज्मा इज अबाउट, कैन सी इन द फिगर, 55% and blood plasma is about 91.5% water and 8.5% other solutes, most of which, ठीक है, इसमें आप देख रहे हो most of which यानी कि 7% are the proteins. ठीक, कि ब्लड प्लाज्मा है, ब्लड प्लाज्मा का 91.5% वाटर एंड 8.5% अदर सोल्यूट, और 8.5% में से 7% आपके प्रोटीन्स हैं.
Some of the proteins in blood plasma are also found elsewhere in the body, but those confined to blood are called plasma protein. जो ब्लड में मिलेंगे उन्हें हम प्लाज्मा प्रोटीन्स कहेंगे. Hepatocytes synthesize most of the plasma proteins, which include, कौन सिंथेसाइज कर रहा है आपका? हिपेटोसाइट फॉर्म द प्लाज्मा प्रोटीन्स. ठीक है, तो इस फिगर में आप देखेंगे कि प्लाज्मा प्रोटीन्स यानी कि एल्बुमिन इट फॉर्म्स द 54% of the plasma proteins, globulin 38%, fibrinogen 7%, and others are 1%. Certain blood cells develop into cells that produce gamma globulin, an important type of globulin. These plasma proteins are also called antibodies या immunoglobulin because they are produced during certain immune response. Foreign substances such as bacteria and virus stimulate the production of millions of different antibodies. An antibody binds specifically to the antigen that stimulate its production and thus disable the invading antigens. Beside proteins, other solutes in the plasma include the electrolytes, nutrients, gases, regulatory substances. Regulatory substances में आप दिखा सकते हो कि जिस तरह एंजाइम्स और हार्मोन्स, गैसेज और वेस्ट प्रोडक्ट. वेस्ट प्रोडक्ट में आपके यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटेनिन, अमोनिया, बिलिरुबिन. ठीक है, देन वी कम ऑन द formed elements. Formed elements of the blood include the three principal components आपके red blood cells, white blood cells and the formed and the platelets. RBC and WBC. RBC and WBC are whole cells. Platelets are cell fragments. ठीक है, कि RBC and WBC ये क्या है? whole cells. और प्लेटलेट्स ये क्या है? सेल फ्रेगमेंट्स. RBC and platelets have just a few roles, but WBC have a number of specialized functions. Several distinct type of the WBC. These are the one thing, WBC are 5,000 to 10,000 per microliters. Red blood cell 4.8 to 5.4 millions and platelets are 1.5 lakhs to 4 lakhs are presents per microliter. ठीक है, अब WBC have the neutrophils which form the 60 to 70%, lymphocyte 20 to 25%, okay, monocytes 3 to 8%, eosinophils 2 to 4% and basophils 0.5 to 1%. ये हो गए आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स. ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आपके हो गए आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड देन द प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स परसेंटेज ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय आरबीसी इज कॉल्ड हेमाटोक्रिट. हेमाटोक्रिट ऑफ 40 इंडिकेट्स दैट 40 समझ में आया कुछ कि परसेंटेज ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय आरबीसी कि टोटल ब्लड वॉल्यूम का कितने परसेंट आरबीसी है उसको आप हेमाटोक्रिट कहोगे. हेमाटोक्रिट जिस तरह 40 है कि तो उसका मतलब है कि 40% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ आरबीसी. समझ गए. द नॉर्मल रेंज ऑफ हेमाटोक्रिट फॉर अडल्ट फीमेल
एक चीज आई इसमें हिमेटोक्रिट, हिमेटोक्रिट है ना, कि हिमेटोक्रिट फीमेल्स के अंदर कितनी है 38 to 46% और मेल के अंदर 40 to 55% Hormone testosterone, present in much higher concentration in male than in the female, stimulate synthesis of erythropoietin, the hormone that in turn stimulate production of RBC. Thus, testosterone contribute to higher hematocrit in males. समझ गए कि हेमेटोक्रिट बताया ना कि 40 से 54 मेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, मींस कि ज़्यादा हेमेटोक्रिट किसके कारण है, हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन इट स्टिमुलेट द क्या प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी ज़्यादा होती है. लोअर वॉल्यूम इन वुमेन्स ड्यूरिंग देयर रिप्रोडक्टिव ईयर्स also may be due to excessive loss of blood during menstruation. A significant drop in hematocrit indicate the anemia. Anemia, a lower than normal number of RBC. Polycythemia, polycythemia, polycythemia यानी कि the percentage of RBC is abnormally high and the hematocrit may be 65% or more. This raises the viscosity of the blood, which increase the resistance to flow, make the blood more difficult for heart to pump. भाई ज़्यादा विस्कोसिटी आरबीसी बढ़ जाएंगे तो विस्कोसिटी बढ़ जाएगी तो ब्लड का फ्लो नहीं हो पाएगा और हार्ट को ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा उसको पंप करने के लिए. इंक्रीज विस्कोसिटी ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू हायर ब्लड प्रेशर and increase risk of stroke. ठीक है, this is all about the composition of the blood. Hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in the comment box. I will resolve it. And the assignment question you can write here that is write about the describe the composition of the blood. Write a short note on the formed elements. 2 questions you can. Thank you very much.